हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्सेज़ हैं जिसमें आता है बीए, बीएससी एंड बीकॉम। जनरली हमें पता है कि ग्रेजुएशन इज़ कंपल्सरी फॉर सिटिंग अप इन एनी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो हम लोग बीए के लिए सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, बीएससी से हम लोग आगे अपना किसी भी फील्ड में जाना चाहें, दैट इज़ स्पेशलाइज्ड फील्ड, दैट फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें हम जा सकते हैं। कॉमर्स से हम लोग बैंकिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। सो दीज आर द ग्रेजुएशन कोर्सेज विच वी विल प्रोवाइडेड राइट नाउ, and the seats available are 80 seats per subject or per course. And what's about post-graduation courses? Post-graduation courses which we will provide it from this year is MSc Physics, Chemistry, Maths and Botany. Post-graduation is compulsory in today's environment, that is competitive exams in today's competitive world. ग्रेजुएशन इज़ नॉट मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है, अधूरे ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो वी कैन sit in a competitive exam by doing graduation, but if a student wants to get depth knowledge of a subject, then he or she must continue their education in post graduation. So we will providing post graduation courses, that is MSc Physics, Chemistry and Maths and Botany. Okay, before some time when we were live at that time, sir was telling about a home science course. What's about that? Yeah, we will also providing BSc Home Science course. You can see that home science is a subject like it is a combination of science and art course, multidisciplinary course. You can generally क्या कि हम लोग सुनते हैं नानी के नुस्खे, दादी के नुस्खे, बट उनका हमारे पास कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होता, तो हम लोग उनको मानते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीमार पड़ गए, आप काढ़ा पी लो, अगर आपके फेस पे पिंपल हो गए तो आप हल्दी लगा लो, बट उसका उनके पास प्रूफ नहीं होता था, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता देते हैं। बाय डूइंग बीएससी होम साइंस हम साइंस और आर्ट को कंबाइन कर देते हैं। जस्ट हमें पता होता है कि टर्मरिक है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आज के एनवायरनमेंट में हमें क्या चाहिए कि एक प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, उसके साथ साथ हमें प्रूफ चाहिए कि ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं। सो फॉर दैट बीएससी होम साइंस इज़ ए वेरी गुड सब्जेक्ट। इससे हम डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट, रिसर्च सेंटर, फैशन डिज़ाइनिंग और टेलरिंग, और ये सब चीज़ों में जिस बच्चे का इंटरेस्ट है वो बीएससी होम साइंस अडॉप्ट कर सकता है। सेंटर, यूनिवर्सिटी, from which university this college is affiliated? Okay, our college Bharatiya Sansthan is affiliated with Maharishi Dayanand University Rohtak, and it is started by our founder and chairman Mr. Rao Kulbir Singh Bohra in 1998, and in 2013 inauguration of college has been started. So yeah, this is affiliated with MDU University Rohtak. What's about examination center? Examination center is decided by either the university or it's been in the college itself. Okay. And what's about the fee structure of the college campus? Okay, fee structure is as per the guideline of the university, and scholarship was also provided to the students. Okay, if someone wants to take admission here, any student, in that case, how can he apply for the admissions here? If any student wants to take admission, then he or she can apply online platform and also come here at the college where the administrative department will help him or her to fill the form. Okay. And what's about the college campus? What kind of facilities and all other things are available here? Okay, first of all, qualified teachers are present here. Friendly and strict environment is also needed, that I talked to you already. Yes. So that's compulsory, and infrastructure is better. Sports facilities, Wi-Fi system is there, and it's all the basic facilities. Yeah, all the basic facilities are okay. So anything you want to say to the 12th pass out students? 12th pass out students, education is something which you must need in our modern era or in competitive exam. So students have to take further education system, and we will provided the students by seeing the futuristic goals. So if any student wants to take admission after 12th, so we must welcome here. We should welcome here. How will you help them? I should help them to get acquainted with qualified and I'm just talking about the admission procedure. Means application form, apply. Yeah, that's. Can they apply here also? Yes, they can apply in the college department, and if they have any issue, then administrative department will help him to fill up the form and the basic requirements which are needed.